So that is why, in fact, in comparison to every, in comparison to Western culture, every non-Western culture is more egalitarian. ठीक है, तो जो वेस्ट, ये वेस्टर्न में ज्यादा ही डिफ्रेंसिएशन है, और इट इज मोर, जैसे इंडिया में सेक्शन 409 ये सब, दैट इज बेस्ड ऑन विक्टोरियन मेंटालिटी. ठीक है, इवन आई वॉज टीचिंग एसे, देन एसे क्लास में आई स्टडीड अबाउट ये सब ओरिजिन. तो देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन subordinate status of women, its origin in different texts. टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो if you see, there was some Muslim feminist, so she was explaining the difference that in Bible, subordination of women is being described as the original sin of women. Fine. And for which it is written that only God has prescribed punishment for women, that women will have to do. But if you see in Quran, it is written that the blame is not on anyone, the blame is on shaitan. Fine. And then God said that nobody has to, मतलब आई डोंट नो दैट मच कितना सही है क्या है, वो तो मैंने फेमिनिज्म की बुक में पढ़ा है. तो गॉड हैज सेड दैट बोथ हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लीड अ गुड लाइफ एंड यू कैन कम आउट ऑफ दिस. तो उसमें मतलब अननेसेसरली बिगर ब्लेम इज नॉट गिवन ऑन वुमेन. Similarly, if you talk about Indian society, as he was telling, equality between the gender. So Western culture, even if you see the most, it's not one of the most unequal society in terms of gender, even in terms of pay, is more of US में ज्यादा inequality है. देन और इवन इन टर्म्स ऑफ जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट है, तो मेनी पीपल डू नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड. लोग कहते हैं गोवा में पोर्चुगीज लॉ है तो यूसीसी काफी अच्छा है, बट देयर इज, इट्स नॉट फेवरेबल टू वुमेन. अगेन if you look at the Muslim marriage, in Muslim marriage, the four wives, all four wives are given equal status. Fine. So it's not that the second wife, जैसे Hindu, because since in Hinduism you have abolished Hindu marriage law है, तो you have abolished polygamy, single marriage, but the data is showing that there are more number of like marriages among Hindus. The thing is, Hindus are comparatively well off, so they can afford 2 wives, 2 houses. Ghar wali, bahar wali, they can afford. Fine. And the worst thing has been the second wife having no status, no legal status, and only after judiciary's intervention. जबकि जो इस्लाम है उसमें या जो भी कुरान में सिस्टम है, ऑल 4 wives had a equal status. तो it has been suggested, there is one feminist lawyer, Flavia Agnes, so she suggests that you cannot blindly go for without understanding the customs, and practice में देखना होगा, historical sense में आपको देखना होगा that historically under what condition and why 4 marriages were allowed, so that the women do not turn destitute. But ये mandatory नहीं है, with certain conditions है, और in general practice नहीं है, this is limited. And historically things have changed over a period of time. और ऊपर से मुस्लिम्स का इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब है कि 4 wife मैनेज करना वो एक बड़ा मुश्किल काम है.
तो थियोरी में क्या चीज है और प्रैक्टिस में क्या चीज है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. मैम And just because a law will come, it will not stop polygamy. So how to end polygamy? Only when you change the basic structure of the society. तो जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक चीजें नहीं आने वाली. यस. मैम जैसे आपने कहा कि थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ अ वुमन वो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स या नॉर्म्स एड अप होते जाते हैं उनके लाइफ में, राइट? तो जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है या इन जनरल क्या होता है कि वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द इविल मैन आउटसाइड, यू नो, सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं, लेकिन क्या हम उसको पैट्रियार्की मारेंगे उस केयर को, या तो फिर हाँ, वो उनको सेल्फ डिफेंस फेलियर सिखा ये दें? मानेंगे, फेलियर टू एंड द पेट्रियार्की. ठीक तो है, या फिर वुमेन को इसीलिए सेल्फ डिफेंस सिखा दें? इसीलिए यू हैव टू टीच फेमिनिज्म नॉट टू वुमेन, टू मेन. मेन को पढ़ाना पड़ेगा. इंडिया में तो ऐसे भी लीडर हैं जो ऐसी भी बातें करते हैं कि लड़के हैं तो गलती कर देते यस हैं. मैम. नाम तो छोड़िए, नाम में क्या लेना देना है. तो अगर लीडर ही ऐसी बातें करेंगे कि लड़के हैं तो हो जाता है, मतलब दैट बिकम्स अ कंसर्न. Fine, and it is a failure of the state where you have to go for protection of this sort. Fine.